Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English 9 and a very warm welcome to the Chase Academy. Students, today we are going to talk about reading. We love to read, right? At least I do. Reading is fun. It's like an entertainment जिसमें आप अपना ख्याल जो है ना अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा एंटरटेन होते हैं बजाय इसके कि आप टीवी पे या स्क्रीन पे कुछ देखते हैं। तो रीडिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। एसएलओ में हमारे पास आज जो है वो है एनालाइज हाउ द ऑथर डिस्टिंग्विशेस हिज और हर पोजीशन फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। देखें, रीडिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी कि अगर आप करिकुलम में देखें, सबसे पहले क्या है? ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, देन यू हैव योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी, एंड देन फाइनली राइटिंग कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो रीडिंग में आपको किस तरह टेस्ट किया जाता है? यू आर आस्क्ड टू रीड समथिंग एंड देन आंसर सम क्वेश्चंस। आपको पैसेज दिया जाता है, मोहम्मद क्या आप पढ़ें और हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें, उस टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए। इसी तरह लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वो भी रीडिंग से रिलेटेड था कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से द रेनेसां, कहां गया द रेनेसां स्कूल? Do they have any issue? Yesterday this learner very intelligently she said, of course after reading everything, meanwhile we are reading, we come to know about कि पर्पस क्या है लिखने का, नजरिया कैसे है। हमें फौरन से पता चल जाता है कि किस टोन में किस तरह की लैंग्वेज है, हार्श है, सॉफ्ट लैंग्वेज है, इनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग लैंग्वेज है। तो हमें रीडिंग से पता चलता है। हमने देखा था पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, पर्पस क्या है लिखने का। हमने देखा था कि एंटरटेनमेंट, परसुएशन और इंफॉर्मेशन देना। आज हम देखेंगे उसी तरह का एसएलओ है एनालाइज। हमने एनालाइज करना है, हमने अपनी एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल टूल्स को यूज करके देखना है हाउ द ऑथर डिस्टिंग्विशेस हिज और हर पोजीशन। डिस्टिंग्विश करना मतलब क्या होता है? फर्क करता है, वाजिया करता है। लिखने वाला अपनी पोजीशन, चाहे वो मेल राइटर है या फीमेल है, दूसरों से जब वो लिखता है कि मैं ये कहता हूं और इसके मुखालिफ ये आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट इस बारे में दिया जाता है, तो आपने फैसला करना है कि कौन सही है। तो ऐसी राइटिंग में, ऐसे टेक्स्ट में जिसमें ऑथर अपनी पोजीशन क्लियर करता है, दूसरों की पोजीशन को, उनके आइडियाज को और क्लेम्स को मेंशन करता है, तो ऐसा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट होता है या परसुएसिव टेक्स्ट कहलाता है। अगर उसमें आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे क्या स्कूल्स में यूनिफॉर्म होने चाहिए, दिस इज योर क्लेम कि नहीं होने चाहिए, या आप इसके बारे में आर्गुमेंट पेश करेंगे। ठीक है सदफ, कि क्यों नहीं होने चाहिए, क्या वजह है? आपने कहा नहीं होने चाहिए, स्कूल में यूनिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट फॉर दैट? मोहम्मद कहेगा होने चाहिए, उसका एक क्लेम है कि होने चाहिए। उसका क्या आर्ग्यूमेंट है इस बारे में? फिर मैं पढ़ने वाला, सुनने वाला, मैं आपसे मुत्तफिक हूं या आपसे, दिस इज माई चॉइस, यू कैन नॉट फोर्स मी टू अग्री विद यू। ठीक है, तो इसी तरह ऑथर ने पोजीशन वाजिया करनी, हमने देखना है कि किस तरह उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से डिफरेंट है। तो इसमें आर्टिकल्स, इसमें ब्लॉग्स, इसमें आपके आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव टेक्स्ट या एसेज या आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव पैराग्राफ्स, पैसेजेस, ये सारा कुछ आ जाता है। ऑलराइट, vertical linkage is there of grade 8. Can you see the same SLO? करिकुलम में एक वर्टिकल लिंकेज है, कुछ अल्फाज के साथ चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं, नए कीवर्ड्स आ जाते हैं, बट यहां पे देखें कीवर्ड डिफरेंट है, और यहां पे देखिएगा एनालाइज करना, और यहां पे पीछे क्या था? आइडेंटिफाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, नैरेटिव, डिटरमिन एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पर्पस इन अ टेक्स्ट, एंड एनालाइज हाउ द ऑथर डिस्टिंग्विशेस हिज और हर पोजीशंस फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। हमारे इस ग्रेड के 3 एसएलओज पिछले ग्रेड में मिलके पढ़ाए गए थे, और इस ग्रेड में हमने उन तीनों को अलग-अलग देखा करिकुलम के मुताबिक।
जी, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट और थीसिस ऑफ द टेक्स्ट? अगर आप बुक में देखें कैन टैब्स इंग्लिश 9 द लाहौर डायरीज के नाम से, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट इज पाकिस्तानीज आर वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत मेहमान नवाज हैं, अच्छी खातिर तवाज़ो करते हैं जब कोई बाहर से आता है। मोहम्मद, जब कोई बाहर से आता है या मेहमान नवाज हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव, why I don't know why people consider them to be such and such, they are nice. ये उसका टोटल आर्ग्यूमेंट था कि मैं as a foreigner, as a person from Netherlands, I visited Pakistan as a person who's an explorer. I found this and this thing, and these things are very beautiful and encouraging. I think everyone should visit Pakistan once so that they can enjoy this hospitality. They can have fun. They can have a different picture. जो मीडिया में दिखाई जाती है उससे मुख्तलिफ एक तस्वीर आपको नजर आती है। आप खुद एक्सपीरियंस करें एजेंडाज और प्रोपेगेंडाज में, यानी जो वेस्टर्न पाकिस्तान की इमेज पोर्ट्रे करता है उसके साथ हम अग्री ना करें, बल्कि हम खुद देखें। तो आर्ग्यूमेंट क्या था या थीसिस, उसको थीसिस भी कहा जाता है, क्या था कि पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल, दे आर गुड पीपल, राइट? एंड स्पेशली शी एक्सप्लोर्ड लाहौर, बट ओवरऑल उसने जर्नलाइज करके पूरे पाकिस्तान को भी अच्छा पोर्ट्रे किया है। ऑलराइट, glossary, in case you are wondering about difficult words, glossary is given on the left side. हमने कल इस पैरा पे बात की थी that this is actually the introductory paragraph और इसके अंदर description है। इसके बाद rickshaw drivers buzz and weave around traffic like flies and cars battle for dominance with their horns। अब ये मंजर कशी कर रहा है ट्रैफिक की कि रिक्शा ड्राइवर्स थे वो इस तरह निकल रहे थे जैसे like flies and cars battle for dominance, cars निकलनी है, cars कोशिश कर रही हैं हम निकल जाएं, रिक्शे वाले कोशिश कर रहे हैं हम निकल जाएं, जैसा हम आजकल देखते हैं, डेली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो some men are chatting and laughing on the side of the road while others rush home with bulging bags of groceries in the golden light. We are driving through Lahore during Ramadan on our way to break the day's fast with a local family। अब ये फैमिली के साथ जो है स्पेंड करते हैं। जो फॉरेनर्स आए हैं, दे आर अ कपल, अ मैन एंड अ वुमन, दे आर कपल, दे आर विजिटिंग अ लोकल फैमिली टू स्पेंड रमजान और टू हैव आइडिया कि वो लोग किस तरह रहते हैं, क्या कल्चरल डिफरेंस है, वो किसी और कल्चर से है, हमारा कल्चर रिलीजियस है, हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर है। तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ के देखेगा कल्चरल कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा और कुछ चीजें आपको इस तरह की नजर आएंगी। As foreigners in Pakistan, we've been treated like nothing less than royalty। कि हमें तो इतना अच्छा ट्रीट किया गया जैसे कोई रॉयल कोई बादशाह होता है, ठीक है। पाकिस्तानी कंसिडर गेस्ट टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। पाकिस्तानी सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ये हमारे लिए एक मेहमान है, हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो किस तरह का क्या पोजीशन है ऑथर की? व्हाट इज द पोजीशन? वी हैव टू एनालाइज। द पोजीशन इज दैट ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो शी वाज ट्रीटेड नाइसली एंड दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। पोजीशन क्या है ऑथर की? पॉजिटिव, इनकरेजिंग, गुड, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है। Pakistanis consider guests to be a gift from Allah and thus they treat them with the most phenomenal hospitality we have ever encountered. Yes, even more so than Iranian hospitality se bhi zyada. Iranis are considered to be hospitable. But according to her, uski kya position hai is bare mein ki no, we are even more hospitable than the Iranians. Now, we are often at loss when faced with such kindness. How can we possibly repay the people for taking us and making us part of their family? हम किस तरह इस चीज को शुक्रिया अदा करें, उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। Now, I'm just not translating it literally, transliteration नहीं है, बल्कि ये we are proving a point. Focus हमारा क्या है? Analyzing the position of author from that of others. When we are hopelessly lost and for caring for us when we are ill.
Whenever we bring it up with our host and friends, they wave it off and have only one request, that when we go home or travel onwards, we tell our family and friends about what people are truly like in Pakistan. जब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो वो कहते हैं कि शुक्रिया अदा मत कीजिएगा, बाहर अपने देश में जाके, अपनी कंट्री में जाके बताइएगा कि हम पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। यानी हम भी सताए हुए हैं उस इमेज से जो हमारे बारे में मीडिया में बनी है। आप जाके बताएं, नुमाइंदगी करें दैट वी आर गुड पीपल। The sputtering sound of an aging motorcycle mixes with the sound of splashing water as our rickshaw driver navigates his way through a minefield of potholes in the road. Barricaded underneath our backpacks, we peer out over the jumble of luggage, taking in our first sights and smells of Lahore. Despite the treacherous road ahead, the driver speeds on, chattering happily with us as he shows off his English skill. Even the rickshaw driver is quite hospitable. He's like very humorous. He's good. He's funny. We tell him about the Netherlands. हमने उनको Netherlands के बारे में बताया. He tells us of Lahore, his home, his beloved city. The conversation then turns to famous foods. Then they talked about food. She tried golgappe and all that. Balls of dough, a bowl of chickpeas. I think Muhammad's mouth is watering right now. Right? Well, this is golgappe, he grins, placing the tray precariously atop our backpack barricade. He takes us a ball as an example. अब ये वो पूरा कि how you should eat a golgappa or pani puri. All right. Language focus. All right. So overall, having a good experience. Ab, you will read that. Now on page 93, we have some questions. Describe the interactions between the tourist and the locals. How does the author portray the hospitality of the Pakistani people? Now, how do you answer this? किस तरह का interaction था tourist का and locals का? Very friendly. They were treated like guests. They were treated like royalties. How does the author portray the hospitality of the Pakistani people? Even better than the Iranians. They were very hospitable and they are very kind. Explore any challenges or moments of cultural misunderstanding faced by the foreigners. क्या cultural misunderstanding है? That Pakistanis are violent, they are not good guests, or they are not good hosts. What else? बहुत सारी misconceptions हैं. Alright, so she cleared that out. Examine the impact of the locals' generosity on the tourists. How does it shape their perception of Pakistan and its people? Locals' generosity, लोगों का जो खुले दिल से उनको वेलकम करना था, generous होना था, वो किस तरह का था? किस तरह उनके ऊपर इस चीज का असर हुआ? किस तरह उन्होंने ये चीज को फील किया? How does the author depict the genuine warmth and friendliness of the people? Now these are some comprehension questions. How do you find that out? आप locate करेंगे कि कहाँ पे इन questions के answer, and then you rephrase in your own words, and that's how you answer comprehensive questions. You don't take anything as it is, copy paste नहीं करते, आप rephrase करके summarize करके अपना answer लिखते हैं. और I think हमने जब प्रेसी और समराइजिंग हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि समराइज किस तरह करते हैं. Anyway, analytical question है at the end. Analyze the role of Ramadan in the narrative. How does it affect the interactions and dynamics? So, when she visited, it was Ramadan. People were fasting. Still they welcomed them. Still they were very, despite being, hungry for all the day, they were still very kind. They were still very generous with them. अच्छा, ये तो comprehension questions हो गए. Now, talk about the text. ये activity आप करेंगे और page 93, जिस QR code में आपको ये video बाद में uploaded नजर आएगी, that discuss the importance of hospitality as a factor in choosing travel destinations. Yes, let's talk about the text. Let's start with Aman. Aman, जब आप किसी country में आपके पास वसाइल हो, आप जाएं, क्या आप उस country को पसंद करेंगे जो visually बहुत ज्यादा beautiful है, attractive है, but they are not very hospitable, या आप उस country को choose करेंगे जहां hospitality बहुत ज्यादा है लेकिन tour destinations कम है? What would you choose?
जहां हॉस्पिटैलिटी ज्यादा है, बिकॉज यू वांट टू बी ट्रीटेड नाइसली. लेट्स talk about that for with the Renaissance. जी, what is the importance of hospitality as a factor in choosing travel destinations? जब आप travel करते हैं in uh, different countries, if you want to travel, do you think people travel for how much do they give importance? How much importance do they give to hospitality? जी, क्या आपको आवाज आ रही है? The Renaissance. Am I audible? जी, yes. हमने अभी एक लेसन को ओवरव्यू किया, लाहौर डायरीज, योर चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम कैंटैब्स बुक, जो हम एक प्रोटोटाइप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एज अ फैक्टर इन चूजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस? कि मेहमान नवाजी का कितनी अहमियत है, क्या रोल है जब कोई भी इंसान, कोई भी ट्रैवलर, टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन को यानी जाने की जगह को चूज करता है कि मैं वेकेशंस में यहां जाऊंगा या यहां जाऊंगी, क्या इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटैलिटी का? जी, बहुत इंपॉर्टेंस है जी. यस, क्या है टाइटल? टॉक अबाउट द टेक्स्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Yes, people feel the warmth, they feel happy, they feel delighted. So, even if there are like very minimum, minimal tourist spots, लेकिन अगर hospitality है लोगों में, they are warm, they are welcoming foreigners जो वहाँ के नहीं है, जो locals नहीं है. So, this leaves a very good impact on the tourists, the travelers. So, what is the takeout? So whenever we encounter any guest, treat them nicely, because we also wanted to be treated nicely whenever we are going to their country or any other country. So this is a mutual relationship and it's very important that we do that. Fill in the table below, keep in view the lessons text. आपने lesson के text को पढ़ना है as a homework, as a task. List down the acts of hospitality, यानी अच्छी बातें जो उनके साथ हुई हैं, जैसे उनको family ने invite किया, they had dinner with them, foods mentioned and transports mentioned, rickshaw and cars, जो भी mentioned है. इससे क्या होगा? You will actively read the text. ये आपको actively text को read करने की एक कोशिश है, and this activity is quite often. Now, author's position. क्या थी author की position उस बारे में? The author shares their own experiences to show how kind and welcoming Pakistani people are. उसने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया ये बताने के लिए कि पाकिस्तानी पीपल आर काइंड एंड वेलकमिंग. Many people have wrong ideas about Pakistan, but the authors show a different side through their personal stories. Why do people have wrong idea about Pakistan? This is uh, in the media, in Western media, uh, they just make stereotypes, they just make assumptions based on false news and all that. So this is the author's position. सबसे पहले, what is the purpose of writing? What type of text is it? Narrative है, ठीक है, एक narrative है, एक तरतीब के साथ है, there is a logical chronological order followed, and what kind of language is used? Descriptive language used है. So इसके अलावा, this is a narrative. What is the purpose? To give information, to clear out the bad image of a country that is actually quite good, but it is presented, unlike that. So, but the author shows a different side through their personal stories. So this is the position. And throughout, she also clarified that I experienced this, but people say otherwise. So they need to mend their understanding. They need to reevaluate their assumptions and
their idea about Pakistan. What is the main point the author is trying to convey about Pakistani culture and hospitality? इस क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आप लाहौर डायरीज ये जो ब्लॉग है, ये जो टेक्स्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देन यू कैन आंसर इट क्वाइट वेल. क्या हमने देखना है? मेन पॉइंट या मेन आइडिया या मेन मैसेज, मेन मॉरल, क्या वो साबित करना चाहती है. सो and this sums up our students learning outcome. क्या था students learning outcome? Analyze author's position from that of others. जब भी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे देखेंगे पहले what is the category? Is it fiction or non-fiction? Is it prose or poetry? Is it a narrative, descriptive, argumentative या persuasive? क्या ये expository essay है? क्या ये एक essay है? क्या ये एक आर्टिकल है? क्या ये एक स्टोरी है? क्या है? किस किस्म का टेक्स्ट है? फिर हम देखेंगे ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इसको लिखा. फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, लिमिटेड या ऑब्जेक्टिव या सेकंड पर्सन में भी अक्सर लिखा जाता है, बट दैट इज क्वाइट रेयर. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखना है? पर्पस क्या है लिखने का, क्यों लिखा उसने, व्हाट इज द रीजन. ठीक है. कितनी चीजें हो गई. अब एक और चीज आज हमने सीखी, व्हाट कि ऑथर की पोजीशन क्या है और दूसरों की क्या है. यानी ऑथर का क्लेम और उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं और दूसरों के क्या हैं, और वो क्या चीज वाजे करना चाह रहा है. हमने एज अ रीडर देखना है किसके दलाइल ज्यादा स्ट्रांग है, हम किसके साथ अग्री करेंगे, और हम इसके बारे में डिबेट एंड डिस्कशंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a very good mashallah Muhammad is sitting over here. If Muhammad reads anything and then all of you, Aman, Nabiya, Sadaf, all of you, तो आप में इख्तिलाफ हो सकता है, आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं, आपका एक क्लेम हो सकता है, आप उसे आर्ग्यू कर सकते हैं. अस्मा, अदनिया, हार्निश या मुबीहा अगर वो यहाँ पे बैठी हैं जूम क्लास में. So whenever you're reading something, share it with your friend, your fellow, your sibling and talk about that. तो इसी तरह जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे पेपर में भी हम देखेंगे कितनी आर्गुमेंट है. ये बंदा कह रहा है एक इंसान कह रहा है ए, एक कह रहा है बी. हम देखेंगे दलाइल किसके ज्यादा स्ट्रांग है. अगर एक टेक्स्ट में आपको इस तरह के आर्गुमेंट्स मिले, दैट इज अ आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट है मोहम्मद? क्यों? उसमें आर्गुमेंट्स हैं, उसमें क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं. यानी क्लेम को भी क्लेम किया गया, काउंटर किया गया, उसके मुकाबले पे कोई और बात की गई. तो हमने ये देखना है कि जो लिखने वाला है, लिखने वाला का क्या आर्गुमेंट है, दूसरों का क्या आर्गुमेंट है, लिखने वाले ने कितने दलाइल और कैसे दलाइल दिए, दूसरों के कैसे दलाइल उसने मेंशन किए, और कौन सी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, ऑथर की पोजीशन किस तरह डिफरेंट है दूसरों से. तो हम इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं और शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं. इसके लिए आपको एक पैसेज मिल सकता है रीडिंग का, उसके अंदर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं. only then you are asked that question, and then only then you can answer that. All right. So and it takes a lot of reading. आप ज्यादा रीडिंग करेंगे, रीडिंग विल बिकम easier for you. अगर आपने एक साल कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल पैराग्राफ भी आपको कॉम्प्रीहेंड करने में मुश्किल होगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी. Same goes for writing, same goes for all the other competencies of English and also for Urdu. उर्दू फिर भी हमारे पास किसी ना किसी तरह प्रैक्टिस हमसे हो जाती है, but what about English? We should give some importance to the second language that we've been learning for so many years, but still we have problem with this. So, number one, reading. Stephen King said, a very famous writer, if you want to be a good writer, you have to be a good reader first. Only then you can become a good writer. So, that's all about today's lecture, dear learners. I hope that you have got positive insights and we have achieved our learning outcome as well. A worksheet is attached. I can show you that as well. उसमें आपने क्या करना है? Text is provided with you. Yes, Dharanasa. जी जी
YouTube पे lectures में upload हो रहे हैं? They will be uploaded in a while due to some issues. Inshallah, they'll be start uploading by tomorrow. Okay. आपने क्या करना है? टेक्स्ट पढ़ना है और आपने बताना है व्हाट इज द मेन पॉइंट. फिर तो वो भी upload होंगे। जी जी पिछले lectures भी upload हो जाएंगे, Friday के भी नहीं upload हुए। जी बिल्कुल. बाय टुमारो जहां से लेक्चर्स डिसकंटिन्यूड थे वो कंटिन्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह. व्हाट इज द मेन पॉइंट और आर्ग्यूमेंट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे, ये भी उसी टेक्स्ट से रिलेटेड है. टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है टारगेट ऑडियंस, की पॉइंट्स जो ऑथर ने बनाए अपनी आर्ग्यूमेंट के लिए. जितने भी आपको इसमें से चीजें मिल रही हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स क्या थे, एविडेंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, रिटोरिकल डिवाइसेस. अगर कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन है फौरन उसको मार्क आउट कर लें और वर्कशीट के साथ एक और पेपर अटैच करें, A4 का या लाइंस वाला पेपर जो भी है, एंड देन सॉल्व द वर्कशीट. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नाउ if we have any kind of question regarding reading, that is warmly welcome. Ji, any question? Yes, good luck with your learning, and inshallah by tomorrow we will be having our oral communication class. The Renaissance, Asma and all the other students, inform them, all of them, be prepared for the oral communication lecture. हम different prompts पे discussion करेंगे, debate भी कर सकते हैं. The SLO will be revealed by tomorrow inshallah, but you have to be prepared for that. All right, thank you so much.